So hey guys, welcome back to the channel, and we are on a question number 14 of Striver CP sheet, and the problem is wrong subtraction. So let's solve it. The little girl Tanya is learning how to decrease a number by 1, but she does it wrong with a number consisting of 2 or more digits. Okay, so Tanya एक छोटी बच्ची है and she doesn't know how to decrease a number. So Tanya subtracts 1 from a number by the following algorithm. तो उसके algorithm check करते हैं कि वो कैसे subtract करती है. If the last digit of the number is non-zero, she decreases the number by 1. अगर last digit non-zero है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है तो वो उसे 1 से decrease कर देगी. If the last digit of the number is 0, तो she divides the number by 10. अगर last number 0 है तो उसे 10 से divide कर देगी. That means कि removing the last digit. Okay. So you are given an integer n. आपको एक integer n दिया है. Tanya will subtract 1 from it k times. तो तान्या ये सेम सब्सट्रैक्शन k टाइम्स करने वाली है. सो योर टास्क इज टू प्रिंट द रिजल्ट आफ्टर ऑल k सब्सट्रैक्शन. तो हमें k सब्सट्रैक्शन के बाद रिजल्ट को प्रिंट करना है. ठीक है. इट इज गारंटीड दैट द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर. तो उसके बाद जो भी ये सारे ऑपरेशन होंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर. दैट्स फॉर श्योर. तो इनपुट देख लेते हैं कैसे दिया. द फर्स्ट लाइन द इनपुट कंटेन टू इंटीजर एन एंड के. सो एन है बिटवीन 2 से 10 की पावर 9 एंड 1 के 50. So yeah, 2 into 10 की power 9 and the number from which Tanya will subtract and number of the subtraction correspondingly. So yeah, clear है. n दिया होगा, k दिया होगा. ठीक है. आउटपुट में द प्रिंट द वन इंटीजर दैट रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग n by 1. आउटपुट प्रिंट करना है. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. 512 एंड 4. तो चार बार ऑपरेशन करने वाली है तान्या. सो फर्स्ट विल बी 512 को 511 पे ले जाएगी. सेकंड वुड बी 511 को 510 पे. सो 12 से 11, 11 से 10 एंड 12 से 11 एंड 11 से 10 एंड देन 510 को वो ले जाएगी 51 पे एंड देन 51 को ऑन द फोर्थ वन शी विल टेक इट टू 50. इसमें ट्राई करते हैं. तो 9 0 है तो 1 गया, 1 0 गई, 2 0 गई, 3 गई, 4 गई, 5 गई, 6 गई, 7 8 9 एंड द रिजल्टेंट वुड बी 1. सो या, simple problem. Let's code it out. So this one's from our last video. If you haven't checked it out, so make sure you go and check it out. And let's start. Integer दिया, and दिया, and उसके बाद तान्या की एल्गोरिथम करनी है हमें. तो नंबर मिल गया and the number of times we need to do that algorithm. So while k is not equal to 0, we need to perform the operation. If k modulo 10 is true, that means कि remainder हमें ज़ीरो नहीं मिलने वाला है for sure. Then we would decrement the n, else we would just divide it by 10, and in the end we are gonna print the n part. So let's try some input. 512 and 4. Let's run it. 50 makes sense. Download the code. This one's our 14th question, so let's check it out. Submitted. Let's try submitting it. So yeah, it's showing wrong answer on the test too. Why so? K is not 0. If k percentage 10, my bad, it should be n. Let's do it again. 14 cpp. Let's try submitting it again. Yeah, accepted. So yeah, that's it for today's videos. If you find this helpful, just like and share it with your friends, and make sure you also subscribe to the channel. See you in the next one.